Hello everyone. Welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert. So today in this session we are going to learn a topic from class 9th science. So I have one thing to announce that my channel is in now collaboration with Infinity Learn. So now onwards you will get much more, good content here. So keep supporting us. So today, the important topic that I'm going to take up is pollination and fertilization. So, as you all know, before starting with it, let me tell you that what I'm going to cover. So, basically, our key points for this session, we'll be covering pollination and the parts, the miscellaneous things also. But the main focus is to learn about heterostyle and hercogamy. So, let's quickly get started and let's learn. So you know that if I talk about plant, you all have seen a lot of plants around you. And I hope you all are aware that main parts of plant are root, shoot, leaf, flower and fruit. See, flower and fruit are optional. Like few plants they have flower or fruit and few plants they might not have. So here I'm talking about the one which have flowers in them, basically which have flowers in them. Okay, so root is the part which goes into the soil. The shoot is the erect part which rises up. Leaves, flower, I hope you all know. Fruit we all enjoy eating. Okay, so now we are going to study about the flowering plants, typically about the flowering plants. See, flowering plants are those which have flowers on them, and we also call them as angiosperms. We also call them as, address them as angiosperms. Okay, so all the plants with flowers they fall in the category of angiosperms. And if I talk about the reproduction, that is the process how they can form a new plant. So let me tell you that like the flowering plants, the part of the plant, the reproductive part of the plant, the reproductive part of the plant here is flower. So sexual reproduction is possible in these plants just because they have flower, because flower is a reproductive part of angiosperms. And I hope you all know about sexual reproduction. That means male gamete, female gamete, fusion and forming zygote, and then that zygote transforms into, undergoes certain changes and then transform into a mature plant. Okay, so here what we are going to study is like how what does the flower has कि उससे हम नए नए तरह का प्लांट पूरा बन सकता है. So उससे पहले we have to know about the parts of flower. So this is a flower. See, in flower what you have, these brightly colored part of plant is called as petals. These green short leaves that you can see are sepals. Okay, and these petals and sepals, I hope it's done. Now this stalk of the flower is called as pedicel. It is called as pedicel. Now what about the parts that are left? So let me tell you that these ones are, you can write it as male reproductive part. So it is a male part of the plant. Okay, flower, and this is a female part of a flower. Now what they contain उसको पढ़ते हैं. तो अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा दिस इज अ मेल पार्ट एंड दिस इज अ फीमेल पार्ट. ठीक है, देखो इस पिक्चर में मैंने आपको यही बताया था, फीमेल एंड मेल. So let me tell you, when I'm talking about the male part, so male part is called as anther. What we call it as? We call it as anther. And the female part is called as carpel. It's called as carpel. So on anther what you can see is that it has got filament. इसको आप stamen भी बोल सकते हो, ठीक है? It has got filament. This is filament. और फिलामेंट के ऊपर ये जो लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एंथर लोब. This is anther lobe. If you cut the section from anther lobe, you can see that it has got pollen grains. क्या है इसके अंदर? These are pollen grains, and pollen grains are male gametes. Pollen grains means it is a male gamete. Now looking at this female part, see it has got this cylindrical structure which is style. This one is style. इसके ऊपर ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस इज स्टिग्मा.
ये जो आप राउंड सा थोड़ा सा ओवल सा देख रहे हो, दिस इज ओवरी, कंप्लीट वन इज ओवरी. ओवरी का वॉल आ गया, आउटर कवरिंग, और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स. एंड ओव्यूल्स आर फीमेल gamete. That gamete means the cells which will actually participate in fertilization. Got it? So if we talk about stamen, anther is like filament, anther lobe containing male gametes, that is pollen grains. And talking about the female part, ovary, then you have style, over it stigma, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स, दैट इज अ फीमेल गैमीट. अब देखते हैं कि पोलन ग्रेन और ओव्यूल के अंदर क्या है. ठीक है, तो आपने पढ़ा ये फिलामेंट है, ये एंथर लोब है और ये पोलन्स है. अगर हम एक पोलन का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस. इसकी 2 लेयर्स होती है इसके ऊपर, और उन 2 लेयर्स को आप क्या बोलते हो, एक्साइन और इंटाइन. आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन, इट इज़ क्वाइट हॉर्नी, ताकि ये डिस्ट्रॉय ना कर पाए इसको, जैसे बर्ड्स वगैरह कोई भी इनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो ये थोड़ी हॉर्नी होती है. अंदर वाली लेयर को आप बोलते हो इंटाइन. इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर होते हैं मेल गेमीट्स. क्या होते हैं, मेल गेमीट्स. एंड मेल गेमीट्स बेसिकली कितने रहते हैं, 2 मेल गेमीट्स. और इसके अंदर एक और सेल रहता है विच इज़ कॉल्ड एज ट्यूब सेल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल. तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, लेट्स से दिस इज इंटाइन, दिस इज एक्साइन, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये 2 मेल गेमीट और एक ट्यूब न्यूक्लियस. तो एक जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है. 3 सेल मीन्स 2 मेल gamete and 1 tube nucleus, exine, intine and cytoplasm. I hope it's clear. Okay, now let's talk about the ovules. तो अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, ये कितने सारे ओव्यूल्स हैं, तो अगर आप एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ वेरी सिंपल. ठीक है, मैं आपको इसको खुद बनाकर बताती हूँ. इसमें क्या रहता है, इसमें सबसे पहले एक सैक बना लोगे, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज सैक, इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक. इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स ऊपर की तरफ होते हैं और 3 सेल्स नीचे की तरफ होते हैं. ओके, ऊपर वाले सेल्स को हम बुला देते हैं एंटीपोडल सेल्स. ओके, और नीचे वाले सेल्स को, ये 2 सेल्स को हम बुलाते हैं सिनर्जिड्स. और ये जो एक ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज एग सेल. इसके बीच में रहते हैं 2 सेल्स ज्वाइंट, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. दिस वन पोलर न्यूक्लियाई. अब इसके ऊपर लेयर बना देते हैं, एक लेयर और फिर एक और लेयर, और इस तरीके से हो गया सिंपल. तो ये जो लेयर्स है ये किस चीज़ की है, न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट. इंटरनल लेयर इज ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट. अब इस पिक्चर को देखो, आप देखो, ये तो हो गया आपका न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट. ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स ऊपर एंटीपोडल, 2 सेल्स नीचे सिनर्जिड, और ये हो गया एग सेल. एंड दिस इज अ पोलर न्यूक्लियाई. और एक पॉइंट आप देख रहे हो जहां पे दोनों लेयर्स एब्सेंट है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये जो स्टॉक है दिस इज फ्यूनिकल. तो इस तरीके से ओव्यूल दिखता है, एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स ऑन टॉप, 3 सेल्स डाउन, मिडल में 2 सेल्स फ्यूज, देन यू हैव न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट, और माइक्रोपाइल जहां पे वो दोनों लेयर्स एब्सेंट है. आई होप यू गॉट इट. With this, we have come to an end of this session. I hope you understood the concept well. So if you like the video, hit the like button, share the video more and more with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed my channel, just subscribe it right now, because this is the channel where you are going to get the quality content. So thank you, bye bye, take care, have a nice day.